Hi students, good morning. Right present in the chat box. Uh, yeah, the look and UI of Google Meet has been changed. So there are few settings in here and there. It's same for the mobile. Mobile में भी same है. Google Meet के कुछ changes हुआ है. सेम है सर। Same है ना? Okay. ठीक है. Thanks. Uh, See here you can see. I'll wait. Share the screen. चले? ठीक है. ओके. स्क्रीन के अंदर स्क्रीन आ रहा है. Wait, huh? Hey. Whoa. You can see the screen. यस सर। What you can see on the screen? थैंक यू स्लाइड। Oh, acha. Because I cannot see anything. Uh, okay. क्या हो रहा है? अरे क्या है? फिर गए. बेटा. What I'll do one thing. Screen के अंदर screen. But I'll just click a photo how I can see it. Okay. Anyways, ठीक है चलो. We'll start. So I guess you can. Yeah, let it be like old method. ठीक है. So in fifth module, चलो थोड़ा starting से जाते हैं. ठीक है. So in fifth module, we are going to discuss about acquisition takeovers, types of takeovers, how to prevent it, and if takeover starts happening, and how to fight with the takeover, how to fight with the bidder, okay, and many other things. And then in this, we discuss type of acquisition friendly by the consent of both the parties, raider and the target. Okay, raider is the acquirer company, so raider and target. If both are not agreeing, then it is a hostile takeover. Then one wants to sell its company because the condition of it is not good. So target company's condition is not good. Okay, financial condition. So he wants to sell it. तो कंडीशन खराब है and then the acquiring company is buying, then it is a bailout takeover. And then if private company is taking over public company, and then
then it is a reverse takeover. Then if uh, acquiring company acquires a target company and after acquisition it retains the target company's name and remove its own name, then it is a black backflip takeover. So in this two were there preventive measures and active measures, defensive measures में when uh, there is a hostile takeover, okay, when friendly takeover is happening, then there is no need of defensive or any anti takeover measures because both the parties are anyways agreeing. Okay, only in the case of hostile takeover, जब जबरदस्ती आ रहा है, when they are when the acquiring company is attacking, then during only during that time these measures are required. Okay, so first one we discussed in the previous class, that was preventive measures. ठीक है, preventive मतलब beforehand we'll take a vaccine and we'll keep it so that if any disease attack us, we can our body is sufficient to fight against that diseases. Okay, so that is a preventive measures, we are taking prevention. Okay, so we are not uh, our company should not look like a very easy target. ओके, ये टारगेट कंपनी है, बहुत डिफिकल्ट है इसको एक्वायर करना, ऐसे लगना चाहिए. सो दैट्स द रीजन प्रिवेंटिव मेजर्स विच वी डिस्कस लास्ट क्लास. टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट एक्टिव मेजर्स और एंटी टेक ओवर मेजर्स. these measures, ये जो है ना, when the attack, even after preventive measures, attacker आता है अटैक करने के लिए. Okay, raider acquiring company comes to buy our company, then during that time, ठीक है, when the target company is being attacked, okay, when they are buying shares or they are influencing the managers or they are doing whatever they want, so during that time the target company takes some measures to avoid that takeover. Okay, that is which we'll study today. Again, that is important. Okay, preventive takeover, we discussed it. Poison pill, poison put, these were there. Okay, again, poison pill, ठीक है, मैं वापस डिस्कस नहीं करते रहने दो. Poison pills, securities will offer to some of the shareholders, they'll not sell it to the acquiring firm. Poison put, bonds will issue to some of the from some of the bond holders. So, in order to take over the company, the bond holders will demand high cash from the acquiring company. People pill, the entire management will threaten that we will resign if you take over our company. Okay, so people pill. Then shark repellent, it is written in the bylaws or the articles of association of the target company that when a company wants to become the owner of of our company, then they have to possess 70 to 80% of the share. Only then they can become the owner of the company. So if they don't have 70 to 80%, no one is the owner. All are the part owners. Okay, so any one company wants to acquire a company, then the owner of the company, the decider of the company, should have 70 to 80% of the shares. So in that case, the acquiring firm will feel that buying 70 to 80% of the share will be very difficult, so we'll back off. Then dual capitalization was when two different kind of capitalization will be there. For some of the shareholders, they will have a higher voting rights. For some of the other shareholders, they will have lesser voting rights. Okay, so higher voting rights ka when the in the process of mergers and acquisition, when the company is taking permission from the shareholders, then the shareholders who have higher capitalization or higher voting rights, they will deny the takeover attempt. ठीक है, same golden parachute, when higher level managers, when they are forced to leave the firm, should be given a pretty much higher compensation. Okay, which will be very difficult for the acquiring firm, वैसा compensation लिख के रखा रहेगा for golden parachute. So it makes the bidder, the target company, unattractive. Same goes for silver parachute. Silver parachute में lower level managers भी आते हैं. ठीक है. अच्छा, ये कब होता है पता है? गोल्डन पैराशूट, सिल्वर पैराशूट. गोल्डन पैराशूट इज व्हेन द हायर लेवल मैनेजमेंट इज वेरी एफिशिएंट, एंड सिल्वर पैराशूट इज जनरली व्हेन द कंपनी इज लेबर इंटेंसिव. ठीक है, लेबर्स ही बहुत सारे रहते हैं कंपनी, एम्प्लॉयज बहुत सारे रहते हैं, देन वी इम्प्लीमेंट सिल्वर पैराशूट. ठीक है, staggered or classified board. In this, the board of directors will have separate expiry dates when they are resigning. So separate expiry dates hai, to get approval from all the board of directors, it will take months together to get the approval from the majority, at least from the majority of the board, for the acquisition to happen, for the takeover to happen. उनको
yes बोलने के लिए बहुत टाइम लगता है, because someone is coming, someone is going out. So the people, the board of directors who are coming in now, they have to be explained about the takeover process. That will take time. Then after some days the other people will go off, and then some new will come up. तो ये बहुत टाइम लग जाता है इसमें. So if the acquiring firm wants the company immediately एक 2-3 महीने में चाहिए, then they will be disheartened कि give us a staggered classified board है. Board of directors are keeps on changing. Board of directors keeps on changing of this firm. So our acquisition will take time. तो हम लोग जाने देते हैं. So this is what we have discussed in the previous class. Today we'll be discussing active measures or anti takeover measures. ठीक है, एक सेकंड, ये कुछ अलग दिख रहा है. Okay, I hope everyone has written present, sir. So where I can see participants. हाँ इधर. Oh, sorry. ठीक है. Just a second. ठीक है. So in this active measures or anti takeover measures, the raider, the acquiring, I'm keep telling raider. I've told in the previous class also. Yeah, RAIDER. Yeah, like Tom Raider. Okay, raider, like the acquiring firm will also be referred to as raider, because he's going to raid the target company. Okay, target company को target company बोलते हैं. Okay, it is a target. Acquiring company को we'll call sometimes raider in this model, just in this model. ठीक है, तो रेडर है या फिर एक्वायरिंग कंपनी है या फिर उसको बिडर भी बोलते हैं. ओके, हॉस्टाइल बिडर, BIDDER. Okay, so these are all the terminologies for the acquiring firm. So when the raider or the bidder is coming to acquire the target company, they have already started the process. Okay, they have started buying the shares, or they have started influencing the employees of the company to resign, or they have started मतलब creating disturbances among the suppliers of that company, among the agents of those companies. ऐसा कुछ disruptive things they have started. ठीक है, रेडर, द टारगेट कंपनी. तो ये सब जब स्टार्ट करते हैं ना, देन द टारगेट कंपनी बिकम्स डिफेंसिव एंड दे स्टार्ट प्रिवेंटिंग देमसेल्व्स. ठीक है, अभी आ गए. ठीक है, कैसे प्रिवेंट करते हैं, और द टारगेट कंपनी टेक्स हेल्प ऑफ मेनी पीपल in this case. So who are those people and how they help them? Okay, so the first one is White Knight. Okay, White Knight, you can see a cartoon of a knight. Okay, so this is the person, or or rather this is a company. Okay, White Knight बोल के एक बंदा रहेगा. This banda can be a company, can be a high net worth individual. So this person or this company will help the target company to save from the raider. ठीक है, अभी जो कंपनी इज कमिंग, द रेडर हु इज कमिंग टू अटैक द टारगेट कंपनी will take the help of this white knight in order to save our company. So how this white knight will save it? The the target company will sell its company to this person, to this white knight, to this company. ठीक है, it's like someone is coming to acquire Faiz Limited, and Faiz Limited cannot protect itself, so Faiz Limited is selling its company to to Rohit Limited. ठीक है, so मैं उनको मेरा पूरा कंपनी सेल कर देता हूँ, या फिर पार्ट ऑफ द कंपनी आई विल सेल इट टू माय वाइट नाइट. एंड आफ्टर द रेडर कम्स एंड चेक्स कि अरे कंपनी तो बचा ही नहीं, आधा कंपनी इधर है, आधा कंपनी उधर है, या फिर पूरा कंपनी उधर, उसको सेल हो चुका है ऑलरेडी. ठीक है, एंड दैट इज अ बिगर फर्म. आई कैनॉट अटैक दैट फर्म. ठीक है, आई कैनॉट go and buy the company from that bigger firm. So better I'll change my plan and go. ठीक है, so after he changes his plan, after he goes, the white knight will return back me my company. ठीक है, by a certain fees or some benefits from my company.
ठीक है, ऐसे बचा देता हूँ. तो white knight is kind of a savior for a target company, where target company sell its company to that white knight, which is pretty much stronger company, pretty much a stronger company. And when the raider finds out that the company has been already sold to a stronger company, then he backs off. And then after, when he goes off, then I'll get back my target company on my name. Okay, so this is what a white knight measure is. बिकॉज द रेडर हैज ऑलरेडी कम, अभी आ गया वो खरीदने को, तो वो खरीदने के पहले मैं किसी और को सेल कर देता हूँ मेरा कंपनी. ठीक है. एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी एनी टाइम. ठीक है, बिकॉज दीज आर वेरी कंफ्यूजिंग. इट्स ठीक है, इट्स इजी टू अंडरस्टैंड बट डिफिकल्ट टू रिमेंबर कि वाइट नाइट में होता क्या था. ठीक है, बिकॉज देर आर मेनी एंड मेजर्स लाइक दैट. इवन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, इमीडिएटली अनम्यूट एंड पॉज. ठीक है, तो वाइट नाइट हो गया. देन द नेक्स्ट वन इज वाइट स्क्वायर डिफेंस. ठीक है, वाइट स्क्वायर डिफेंस में यू कैन सी देर इज नॉट अ नाइट बट देर इज एन आर्मर ऑफ नाइट. ये SQUIRE का मतलब इज ओल्ड काइंड ऑफ एन आर्मर. ठीक है, दे विल बी, सी यू कैन सी ये सब आर्मर है वेयर, अगर ये पहले पुराने जमाने का है, बट इट इज लाइक अ बुलेट प्रूफ जैकेट ऑल्सो, you can say. So that only an armor will be provided. ठीक है, आई कैनॉट सेल माई एंटायर कंपनी टू दैट कंपनी. एक दूसरा कंपनी है, अभी जैसे फेज लिमिटेड हैड सोल्ड टू रोहित लिमिटेड इन ऑर्डर टू अवॉइड द acquisition. So that was in white knight. In white square difference, in that Rohit Limited is not matlab, doesn't have the capacity to buy Faiz Limited. So what both of us discuss, तो टारगेट कंपनी और वाइट स्क्वायर डिफरेंस जो भी है, दोनों मिलके डिस्कस करते कि अभी बचाएंगे कैसे कंपनी को. सो वी विल we will find some friendly companies, okay, and we will distribute the shares to those companies. तुम लोग रख लो, तुम लोग भी शेयर्स बनो, तो you also become the owners, you also become the owners करके, जो दोनों के कॉमन फ्रेंड्स हैं, फैज लिमिटेड एंड रोहित लिमिटेड के जो कॉमन फ्रेंड्स है, सो वी विल सेल द शेयर्स ऑफ फैज लिमिटेड टू दोज फ्रेंड्स एंड विल डिस्ट्रीब्यूट देम एंड विल टेल देम नॉट टू सेल इट टू एनीवन. Okay, because there is an attempt of takeover. So when the raider starts buying the shares, then it find itself that I cannot buy many shares and I cannot become the owner. ठीक है, 50% से ज़्यादा शेयर मैं खरीद ही नहीं सकता, because the shares have been distributed to their friends and their friends will never sell me the shares. So I cannot become the shareholder, I cannot become the owner. तो disheartened होके he loses the war. ठीक है, वो जो आ रहा था रेड करने के लिए, ही बैक्स ऑफ. देन आफ्टरवर्ड्स एवरीवन, आई नीड टू इमीडिएटली टेक बैक द शेयर्स फ्रॉम माय फ्रेंड्स आल्सो, बिकॉज पता नहीं वो लोग भी एक दूसरे के साथ शेयर करके दे कैन बिकम द ओनर ऑफ द फर्म. सो इट, बिकॉज द शेयर्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू मेनी पीपल, मेनी फ्रेंड्स. Okay, so once the raider goes back, I need to immediately buy back the shares from those people. Okay, and I cannot just give the shares. There should be a proper transaction on the NSE and BSE portal if it is in India. So proper transaction होना चाहिए. There should be any rights issue or a bonus issue, or shares should be sold at a lesser price. But the trading of shares should happen. ठीक है, ऐसे ही दे नहीं सकता, ऐसे दे के ले रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं होता. तो proper transaction should happen of the shares. ठीक है, and after that again the reverse transaction should happen of the shares. ठीक है, it is not just like you are giving and taking it back. ठीक है, वाइट स्क्वायर डिफरेंस, वाइट नाइट में there is one company to whom I am selling the company just for certain period of time, then again I'll buy back the company. White square difference, I cannot sell my company to anyone. ठीक है, there are no friend, there is no kind of a friend like that who can buy my entire company or the part of the company. So I'll find a friend, or a kind of a defense, who will find all many other friends, and I can distribute the shares to those friends, and they will not sell it to the raider, and they'll return me back the shares after the raider is gone. ठीक है, वाइड स्क्वायर डिफरेंस. थर्ड है ग्रीन मेल. ठीक है, इट्स रिटन ग्रीन मेल इज द न्यू ब्लैक मेल. इसमें क्या होता है, ग्रीन मेल में the raider has come. Okay, the acquiring company has come and started acquiring the shares.
ठीक है, थोड़े थोड़े शेयर होल्डर्स है, ही इज ऑफरिंग मोर शेयर प्राइस एंड टेकिंग द शेयर्स। ठीक है, कुछ शेयर्स है अभी, जैसे कि इफ आई एम हैविंग 60% ऑफ द शेयर्स, सॉरी सॉरी, आई एम हैविंग 30% ऑफ द शेयर्स, ठीक है, और 40% ऑफ द शेयर, 60% ऑफ द शेयर इज बिन डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू मेनी रिटेल ओनर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स है, कंपनी, देर आर सम कंपनीज who have invested in our company, तो 5% शेयर किसी के पास है, 10% शेयर किसी के पास है, ठीक है, 15% शेयर्स किसी के पास है, देर आर HNIs who have a percentage of shares in our company as an investment, there are retail investors who have invested, तो ये सब मिला के there are around 60% of shares are outside in the public, and remaining 40% of the shares is with me, ठीक है। So technically, as the majority I am having a higher voting rights, higher power, I have the control over extraordinary general meeting जिसमें 75% से ज़्यादा वोटिंग चाहिए, तो आई शुड बी एग्रीइंग टू दैट, so मेरे पास ज़्यादा कंट्रोल है by having 40% of the shares, but and the remaining 60% is segregated in the public. No, the highest majority of shareholding is with me, 40%, and the rest, the other people have 15%, 5%, 10%, like that. Okay, this is the scenario. Now, in this scenario, the raider is coming, the acquiring company is coming and influencing or giving higher prices to some of the shareholders, जिसके पास 5% है, 15% है, 20% है, उनको है ना ज़्यादा पैसा दे रहा है, is giving them extra money as per the share price. Share price suppose 2,000 rupees है, तो he is giving them 3,000, 3,500 per share rupees, per share price, and they are selling the shares to the raider. Now Raider has now acquired maybe 30% of the shares by doing all these things. Now the second control of the company is the Raider. First मेरे पास है 40%, next 30% Raider के पास है. Now I have understood कि अभी ये जो Raider है 30% लिया है, that means he is very interested in acquiring the ownership. I have understood that. So I am going and approaching the Raider. I don't want to sell my company. I don't want you to become the owner of the company. I want the ownership. I want to retain the ownership. तुम मत खरीद मेरा कंपनी. So I'm negotiating with him. तो रेडर क्या बोलता है? ओके, इफ यू वांट टू रिटेन योर कंपनी, बाय शेयर्स फ्रॉम मी. मैंने उनको बहुत पैसा देके खरीदा है, तुम मेरे से शेयर खरीद. ठीक है, द रेडर इज टेलिंग टू द टारगेट कंपनी. तो टारगेट कंपनी, मतलब anyhow if they want to save their company, they will give money to raider and buy the shares from the raider. Okay, this is a kind of a green mail or a blackmail. Okay, it is termed as green mail. Okay, the raider is doing a kind of a blackmail to the target company. If you want to save the company, buy shares from me at a higher price, और ज़्यादा higher price quote करेगा. ओके, सो एक काइंड ऑफ अ ब्लैकमेल जैसे करेगा रेडर. इट कीप्स ऑन बाइंग द शेयर्स इन द मार्केट एंड ट्राई, एंड समटाइम्स ही मे नॉट बी इंटरेस्टेड, बट वो पैसे कमाने, जस्ट टू अर्न मनी, he may buy the shares from the market and he pretends that he is planning to buy the company. So the target company owners will be very much, what do you say, they will be fearful, hyper, that our company is going to be bought by some raider. So they'll approach raider and tell them not to buy our company. So raider will tell, ठीक है, buy the shares from me at a higher prices. ठीक है, it's kind of a blackmail. Okay, this is what is green mail about. ठीक है, next is white mail. ठीक है, कैसे नाम है ना. Okay, so white mail में क्या है? Again, same situation like in green mail. Okay, there are 40% shareholding is with me and 60% of the shareholding is with the public. ठीक है, ऐसा बहुत सारा public में. So now Raider has come and he has started acquiring 5% का, 3% का, 10% का, ये एक्वायरिंग स्टार्ट किया. देन आई एज अ टारगेट कंपनी हैज ऑब्जर्व्ड कि वो ना जबरदस्ती का एक्विजिशन स्टार्ट किया है, तो ही कैन ब्लैकमेल मी लेटर ऑन और ग्रीन मेल मी लेटर ऑन. ठीक है, सो वो ग्रीन मेल करने के पहले ही आई विल डू अ वाइट मेल. ठीक है, इन वाइट मेल व्हाट आई विल डू इज आई विल give more shares to all the shareholders.
ठीक है। आई हैव ऑथराइज्ड कैपिटल रहता है कंपनी के पास, ठीक है, मे बी 1 करोड़ शेयर और 10 करोड़ और 100 करोड़ शेयर्स रहता है. फ्रॉम दैट ऑथराइज्ड कैपिटल सम पार्ट ऑफ दैट विल बी इशूड एंड सम पार्ट ऑफ दैट विल बी आउटस्टैंडिंग इन द मार्केट. सो आउटस्टैंडिंग शेयर्स आर लेस देन द ऑथराइज्ड कैपिटल. सो ऑथराइज्ड कैपिटल में जो भी शेयर्स है ना एडिशनल, every all the shares will be issued just like that in the market as in the form of bonus share or private placement or right issue, preemptive rights, या कुछ भी कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन इन डिटेल वी आर गोइंग टू डिस्कस इन नेक्स्ट मॉड्यूल, ठीक है. बट कोई भी एक कॉर्पोरेट एक्शन करके जस्ट आई एम एज अ टारगेट कंपनी विल डिस्ट्रीब्यूट द शेयर्स अमॉन्ग द पब्लिक. ऐसी ले लो फ्री में ले लो, बोनस बोनस मिल रहा है. यू हैव 1 शेयर, आई गिव यू 2 शेयर्स इन इन रिटर्न ऑफ 1 शेयर, सॉरी, फॉर 1 शेयर. ठीक है. सो पर्सन हु इज हैविंग 1 शेयर, ही विल बिकम द शेयर होल्डर ऑफ 3 शेयर्स जस्ट लाइक दैट. ठीक है. बोनस दे रहा हूँ मैं. ओके. डिविडेंड, शेयर डिविडेंड दे रहा हूँ, डिविडेंड इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स. Okay, so person who is having 10 shares, he will be owner of 30 shares. Person who is having 100 shares, he will be owner of 300 shares, just like that. ठीक है. तो दे आर बिकमिंग हैप्पी. एंड नाउ व्हेन द टारगेट कंपनी इज एक्वायरिंग द शेयर्स, द पर्सन हु इज हैविंग 100 नाउ हैज 300 शेयर्स, सो ही कैन सेल 300 शेयर्स टू दैट कंपनी, रेडर को, और ही विल डेफिनेटली कोट हायर प्राइस. ठीक है. तो रेडर विल फाइंड इटसेल्फ और इतने सारे शेयर्स अभी खरीदने हैं. ओके. इनिशियली देवर लेस शेयर्स और रेडर वाज वेरी हैप्पी कि ठीक है थोड़े ही शेयर्स है, इमीडिएटली आई विल बिकम in the terms of percentage, I will become the second highest or the third highest or maybe first highest in the ownership pattern. But now there are so many shares in the market that trader feels that it is very difficult for me to buy these many shares just to become the second position or the first position. So the trader gives up and he goes back. This is white whale. ठीक है. ग्रीन whale में क्या था? The raider is selling the shares to the target company at higher price. ठीक है. वो काइंड ऑफ ब्लैकमेल कर रहा था. मैं नहीं एक्वायर करता, बट इन दैट कंडीशन यू नीड टू बाय शेयर्स फ्रॉम मी. व्हाइट मेल में द टारगेट कंपनी इज डूइंग अ व्हाइट मेल. द टारगेट कंपनी इज डूइंग समथिंग दैट इट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग द शेयर्स इन द मार्केट, so that it is very difficult for trader to buy the shares from the market. ठीक है. Any doubts? ठीक है. Next. Next, this is very old game. ठीक है. मेरे को मिला है फोटो, ऐसे फोटो इज अवेलेबल. ठीक है. You might not have seen this game because this before before XP, sorry, before Windows 97 में था ये. ठीक है. You might have not seen the PC as well. वो पहले बहुत पहले ज़माने में there was this was one game. It was very difficult game. Okay, no one used to clear it. In this case, if those who don't know about this game, these are the four what I can say monsters. Okay, these are the four people. They will be just roaming around here and there. Okay, this is our player. ये हम लोग हैं. We need to keep on eating this small, I don't know what this is, small dots. Okay, we should we'll move like this here and there. Just right, left, up, down arrow. Okay, इतना ही करके है ना हम लोग को ये सब खाना है. ठीक है. Just I'm explaining the game. I'm not explaining the concept. Yeah, just the game. So we'll be running around here and there and we'll be eating all the small dots. Okay, we need to complete it before they catch us, so they will be also roaming here and there. Okay, and it is very difficult to मतलब dodge them. ठीक है. बहुत मुश्किल से डॉज होते थे. मैं एक लेवल भी पार नहीं किया मैंने. ठीक है. मेरे when I was very small, maybe in first or second standard I have played this game. ठीक है. फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड मतलब in 1997 or 8, 1998 when you were born. ठीक है. that time I used to play this game and ये small dots collect करना है. Okay, and they will be chasing me. ये जो big dots है ना, this big dots है ना, when I eat these big dots, they will become my prey. PREY. ठीक है. ये लोग मेरे शिकार बन जाते हैं. Now I can eat them as well and they start running from me.
just for certain period of time, maybe for 30 seconds or so. तो जब ये आई ईट दिस, आई स्टार्ट चेजिंग देम, एंड व्हेन आई ईट देम दे विल गो ऑफ. ठीक है, अब ये चारों को खा लिया तो कोई भी नहीं रहेगा इधर गेम में. बट ये लोग भी ऐसे भागते थे ना, एक भी नहीं मिलता था ये खाने के बाद में. ओके, so this was the game all about. Now what is the concept Pac-Man defense में? Pac-Man defense है. So if you know what I've told in the game, I am going around here and there eating these small dots, and they are the raiders. They are the acquiring company. I am the target company. So they are targeting me when I'm eating the small dots. When I eat the big dots, they will become the target and I'll become the acquiring company. You understand? When I eat these bigger dots, they will be the what do you say? The shikar, and I'll become the shikari. Okay, so they will run from me. So in Pac-Man defense also the exact same thing the company does, the target company does. When the raider comes, the acquiring company comes and starts acquiring the shares of the target company from the share market, okay, from the public, then what I will do as a target company, I will start acquiring the shares of the acquiring company from the market. ठीक है, वो मेरा शेयर खरीद रहा है ना, मैं उसका शेयर खरीदता हूँ, एंड I will pretend that I am buying its shares and I'll become the acquiring company of that raider. ठीक है, you're getting it. He is buying my shares to become the owner of my company in order to take over my company. So what I'll do, I'll not prevent my company, instead I'll go and start buying the shares of the acquiring company. ओके, तो आई कौन है, मैं टारगेट कंपनी हूँ. टारगेट कंपनी जाके एक्वायरिंग कंपनी के शेयर्स खरीदने लग जाता है बहुत सारे, सो दैट एक्वायरिंग कंपनी विल बी गेट फ्राइटेंड कि अरे ये मेरा ही कंपनी, मैं इसका कंपनी खरीद रहा हूँ, ये मेरा कंपनी खरीदने जा रहा है. सो ही विल स्टॉप बाइंग एंड ही स्टार्ट्स डिफेंडिंग हिमसेल्फ. ठीक है, सो ऐसा उल्टा कर देते हैं. सो वी डोंट डिफेंड आवरसेल्फ, वी अटैक द अटैकर, वी अटैक द रेडर्स कंपनी, so that the raider will back off and start protecting his own company. So this is the Pac-Man defense. These are all real things, huh? Okay, which happens during mergers and acquisition in the real life, real world applications. So there are many measures like that. ठीक है, you understood this Pac-Man defense? ठीक है, जो हमको अटैक करने आ रहा है हम लोग ही उसको अटैक कर देते हैं. We don't defend ourselves. ठीक है, we try to defend it, but if it is not happening, then we go and start acquiring the shares of the raider. Okay, so this is what Pac-Man defense is. Okay, any doubts? नहीं, ठीक है. ठीक है, ये है क्राउन ज्वेल्स लॉकअप. ये WWF का WWE का, हाँ, हम लोग के टाइम पे WWF था. ओके, सो WWF का फोटो है, मे बी. I don't know why crown jewel is called like that. ठीक है, some boys might be knowing this. Oh, probably girls also might be knowing this. तो crown jewels क्या है? In this it is said crown jewels lockup. Okay, क्या है? Just a second. हाँ. Crown jewels lockup. Crown jewels lockup is there are few what do you say? Uh, there is one, actually basically a one asset, okay, which is very attractive, and that is attracting the reader. Okay, that asset can be a patent, okay, can be a brand, or can be a brand name, or something like that, something similar to that. For example, चलो भी एक real life example देते हैं कि suppose cafe coffee day, okay, is a pretty much big company. Okay, for that cafe outlets are there of cafe coffee day. Now one another company who is very big company, okay, wants to enter into this chain of coffee business. Now it is finding that I don't want to start it from the scratch, I'll just buy the any coffee retail chain and I can enter into the company. Okay, you're getting the scenario. There is one big company who is a raider, who will be acting as a raider or acquirer. That raider wants to start a company into coffee chain, coffee business में उसको start करना है अपना. तो
he is finding a target company who is already in the coffee business. Okay, and he finds out that there are many coffee estates of Cafe Coffee Day in the prime location in South Karnataka. बहुत सारे estates हैं इधर कुर्ग में और इधर इधर बहुत सारे estates हैं Cafe Coffee Day के. So as a company I'm interested into that estates. ठीक है, मेरे को कॉफी कॉफी डे का नाम नहीं चाहिए. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दी कॉफी शॉप्स दे हैव थ्रू आउट इंडिया. मेरे को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है. मेरे को कॉफी एस्टेट्स चाहिए बिकॉज इन दैट एस्टेट्स दे आर ग्रोइंग वेरी हाई गुड क्वालिटी ऑफ कॉफी एंड देर आर नो मोर एस्टेट्स टू बी सोल्ड. ठीक है, उधर कॉफी एस्टेट्स और ज़्यादा नहीं है जिधर वी कैन सेटअप आर ओन कॉफी एस्टेट्स. ठीक है, नए से बनाएंगे नहीं हम लोग. तो ऑलरेडी जो कॉफी के एस्टेट्स है वी वांट टू बाय दैट एस्टेट्स. सो इफ सपोज वी बाय कैफे कॉफी डे तो ऑटोमेटिकली ऑल दोज एसेट्स विल बी आर्स. ठीक है, सो दैट इज व्हाट द रीडर इज थिंकिंग कि मेरे को कॉफी एस्टेट्स खरीदना है. सो टू बाय कॉफी एस्टेट्स आई विल बाय कैफे कॉफी डे सो दैट ऑल द कॉफी एस्टेट्स विल belong to me after the acquisition. So I start the process. ठीक है, I as the raider starts the process of acquisition. Slowly shares खरीद रहा है, ये खरीद रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है. Now cafe coffee day owners realize कि हम लोग का कॉफी का जो बिजनेस है that is being targeted by the raider. ठीक है, he is getting interested in our business and he wants to buy our company. तो हम लोग को अभी कंपनी बचाना है. And we'll find out why he is interested. First of all, target company owners will try to find out why the raider is interested in buying our company. And after the analysis, the target company finds out that because of that coffee estates, he is buying our company. So to save our company, to save the target company क्या करता है, वो कॉफी के एस्टेट्स है ना किसी और को सेल कर देता है. हमको नहीं चाहिए, जाओ. ठीक है, we'll sell off the coffee estates. Only, not all, but majority of the coffee estates will be sold to any other companies. Okay, so that he will not be interested in buying our company. तो अभी रेडर को पता चलता है कि अरे कॉफी एस्टेट्स for that I was planning to buy cafe coffee day. Now that coffee estates has been sold to someone else. So he'll not be interested in acquisition of cafe coffee day company. ओके, तो क्राउन ज्वेल्स लॉकअप ऐसे ही है. तो क्राउन ज्वेल क्या था उसमें? क्राउन ज्वेल इन दैट कंपनी वाज द कॉफी एस्टेट्स. Okay, because of those coffee estates that raider was coming to acquire our company. So our crown jewel ko we'll sacrifice or whatever you can say. So we'll sell off the crown jewels to some other people so that the raider who is coming to acquire our company will go off. ठीक है, he will not acquire our company. So एक crown jewels lockup है. ठीक है, दिस कैन बी फॉर एनी पेटेंट ऑल्सो. एक स्मॉल फार्मास्यूटिकल कंपनी है हु हैज डिस्कवर्ड व्हाट इज से अ मेडिसिन ऑफ मे बी अ वेरी किसी का भी मेडिसिन, एक बड़ा सा मेडिसिन, सिंपल सा मेडिसिन बनाया है which can cure maybe cancer, some deadly diseases like cancer or AIDS. तो वो small company है and that company has got patent on that chemical formula. Okay, छोटा company है. Now the bigger companies have found out that उसके पास formula मिल गया and he has got the patent of that. So bigger pharmaceutical companies like maybe Lupin or Sun Pharma or Ranbaxy, they have the eye on that smaller pharmaceutical company who has got the brand and who has got the patent for that medicine. So to get that patency of that medicine, they will try to acquire the entire pharmaceutical company itself. ठीक है, so that pharmaceutical company can save itself by selling the patency right to some another company. तो patents वो जो मेडिसिन का जो पेटेंट मिला था वो पेटेंट को सेल कर देता है so that Ranbaxy or Sun Pharma will not what do you say, try to take over that smaller pharmaceutical company. ठीक है, so that is a crown jewel. Okay, next is share repurchase. ठीक है, ये सिंपल है. ठीक है, शेयर रीपर्चेस में क्या है? आई जस्ट when I find out that the reader is buying the shares and trying to take over, I start buying shares from the public. वो भी शेयर बाय कर रहा है, मैं भी शेयर बाय करता हूँ पब्लिक का. Buyback options. You must have heard and seen in the
न्यूज़ एज वेल। शेयर बायबैक्स का ऑफर दे रहा है, इन्फोसिस का शेयर बायबैक चल रहा है, टीसीएस का शेयर बायबैक चल रहा है, माइंड ट्री का भी बहुत ज़्यादा शेयर बायबैक चल रहा था। ओके, द शेयर बायबैक, द कंपनी इटसेल्फ विल बाय द शेयर्स फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, सो दैट देर विल बी लेसर शेयर्स इन द मार्केट एंड द कंपनी ओनर्स विल हैव मोर शेयर होल्डिंग, एंड द रेडर इफ इट इज बाइंग फ्रॉम द शेयर्स इन द मार्केट, वो ज़्यादा खरीद के ओनर नहीं बन सकता। ठीक है, देर इज नो चांस ही कैन बिकम द ओनर ऑफ द कंपनी, बिकॉज we have majority and we'll buy, or जितने भी shares are available, we'll buy it from the market. So just the shares will be less in the market for the raider to buy and become the owner, to take over. ठीक है, ये simple था. Next is divestiture. Okay, again very much similar to Crown Jewels lockup. In just divestiture, Crown Jewels lockup में क्या था? I'm selling a brand or I'm selling some asset. ठीक है, जो एक important चीज था, I'm selling that. Divestiture में कैसा है? I'll if a raider is coming and it is seeing that ये अच्छा business है इसका, ये वाला अच्छा business है, तो I'll sell off the business. ठीक है, बिजनेस सेल कर देता हूँ. ठीक है, मे बी इट्स जस्ट लाइक देर इज अ ऑटोमोबाइल कंपनी who is manufacturing two wheelers, who is manufacturing cars as well, who is manufacturing EV as well, electric vehicles, and that automobile company is growing because it has excellent electric vehicles. Electric vehicles बहुत boom हो गया and everyone is interested in electric vehicles of those companies. ठीक है, तो our target company का जो electric vehicles division है, it is booming like anything. And the acquiring company who might also be an automobile company, उनका electric vehicles का division चल रहा ही नहीं है. उनका electric vehicles एकदम फालतू का इलेक्ट्रिक व्हीकल, कुछ मतलब मजा ही नहीं है उसमें. नो वन इज बाइंग, देयर इज नो मार्केट शेयर फॉर ईवीज ऑफ द एक्वायरिंग कंपनी. सो एक्वायरिंग कंपनी इज मतलब इट हैज एन आई ऑन द इलेक्ट्रिक व्हीकल डिवीजन ऑफ द टारगेट कंपनी. तो टारगेट कंपनी का जो दूसरा फ्यूल इंजेक्शन व्हीकल्स है उसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं है. ओनली फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल डिवीजन द रेडर इज कमिंग टू एक्वायर दैट कंपनी. ठीक है, ये टारगेट कंपनी को पता चल गया कि बिकॉज ऑफ आर इलेक्ट्रिक व्हीकल डिवीजन दैट कंपनी इज कमिंग टू एक्वायर अस. तो दे विल मेक द इलेक्ट्रिक व्हीकल डिवीजन एज अ सेपरेट कंपनी एंड सेल इट टू समवन. ठीक है, हमारा कंपनी तो बच जाएगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हम लोग सेल कर देते हैं किसी को. ठीक है, जस्ट एट अ हायर प्राइस. सो अदर कंपनी विल बी इंटरेस्टेड. हाँ ठीक है, मेरे को दे दो डिवीजन, तुम्हारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वैसे ही बहुत अच्छा चल रहा है, सो आई विल बाय एट अ हायर प्राइस. ठीक है, so so this is a kind of a divestiture. I'll divest my um, what do you say, my divisions, or not the assets particularly. Okay, in divestiture, it will be a kind of a subsidiary company, or a small division will be there. Crown Jewels lockup में एक one or two assets, very important assets will be there. ठीक है, next one is, and last second last one is asset restructuring. ठीक है, asset restructuring is also very simple. I'll just sell off few of the assets. इधर है ये जेंगा है, क्या बोलते हैं इसको? हाँ, तो ऐसा है, तो we are just removing some assets so that our, what do you say, this should look unstable. We'll restructure the assets, sell some of the assets, buy some of the assets, do some restructuring in our assets. ठीक है, क्राउन ज्वेल्स की तरह ही लगता है एसेट रिस्ट्रक्चरिंग. इन क्राउन ज्वेल्स जस्ट रिमेंबर देयर इज वन और टू एसेट, or maybe a kind of a brand name also, a patent, anything can be there in crown jewels, but one or two will be there. In asset restructuring there is no kind of a what do you say, फैंसी एसेट विच इज अट्रैक्टिव एसेट नहीं है कुछ भी, बट देर आर बहुत सारे एसेट्स हैं. सो आई विल स्टार्ट सेलिंग सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एसेट्स एंड रिटेनिंग सम ऑफ द एसेट्स. तो हम लोग का जो पोर्टफोलियो है, एसेट का पोर्टफोलियो, इट विल लुक वेरी अनस्टेबल लाइक दिस जेंगा. एक एक को इधर से निकाल रहे, एक को उधर से निकाल रहे, ऊपर रख रहे. सो आई विल मेक दिस स्ट्रक्चर अनस्टेबल, माई एसेट स्ट्रक्चर अनस्टेबल, सो दैट द रेडर विल बी नॉट इंटरेस्टेड. ठीक है, कौन सा फालतू का कंपनी है यार करके वो चला जाएगा. That's it. ठीक है, लास्ट वन, ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट. ठीक है, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ये बंदा आ गया इधर, अभी रुक गया. ओके, नाउ देयर इज अ ह्यूज गैप. दिस पर्सन इज अ रेडर. ठीक है, ये उसका कंपनी है, एक्वायरिंग कंपनी. ये मैं इधर हूँ, टारगेट कंपनी. ओके, अच्छे से बनाता रहूँ मैं.
ठीक है, दिस इज द टारगेट कंपनी, दिस इज द एक्वायरिंग कंपनी, ही इज द रेडर. इसमें क्या हो रहा है, when he comes here, okay, and he might construct a bridge here, or he might construct a bridge here, and he'll come and acquire me. So I know कि he has the potential to make a bridge. तो ये ब्रिज बनाने के पहले I'll just do a negotiation with him that you don't buy my company. ठीक है, wait, I'll give you some good offer. ठीक है, or else I'll give you some percentage. या it is not a kind of a ये क्या बोलते हैं, what do you say, अरे यार, not getting that word. हाँ, रिश्वत. हाँ, रिश्वत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, what do you call रिश्वत? Corruption. हाँ, नहीं करप्शन. हाँ, नहीं करप्शन, या Bribe, काइंड ऑफ, क्या क्या. bribe. हाँ, ब्राइब, या थैंक्स. याद ही नहीं रहता. ओके, तो आई एम गिविंग हिम अ काइंड ऑफ अ ब्राइब और अ फी. ठीक है, कुछ पैसा दे रहा हूँ मैं. Basically, it is not exactly a bribe, it is a legal bribe or just an agreement that I'll give him some money, some fees, some cash, some benefit to this person, stating that you don't buy my company, take this money, or else I'll keep on giving you money every year or some benefits every year, so you don't come and buy my company. So we'll make an agreement so that he'll not make a bridge and come here. So they will, I'll block the bridge, and I'll make an agreement with him that you don't buy my company, I'll in return I'll give you some money. ठीक है, बट दिस इज वेरी मच, what you can say, दिस इज वेरी मच नॉट लॉन्ग टर्म, इट इज वेरी मच शॉर्ट टर्म, बिकॉज वो कब तक फी दोगे तुम लोग. ओके, सो इट इज जस्ट अ काइंड ऑफ अ शॉर्ट टर्म protection from the raider. And after doing this, after that agreement standstill, अभी उसको रुका दिया ना, standstill agreement है. After that we will start doing some other restructuring in our company in order to avoid इट्स फर्दर प्रोसीडिंग, मतलब आगे का वो आना नहीं चाहिए आगे. सो टू स्टॉप हिम आई विल कीप ऑन डूइंग समथिंग. तो इट कैन बी अ ग्रीन मेल ऑल्सो, एक ग्रीन मेल भी बन सकता है आगे जाके. स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट, ही हैज कम दिस लॉन्ग, तो ही माइट हैव एक्वायर्ड सम ऑफ आवर शेयर्स, थोड़े बहुत शेयर्स इसने एक्वायर किया रहेगा. सो ही कैन ग्रीन मेल अस दैट ही विल टेल अस, ठीक है मेरे शेयर्स खरीद लो अभी मेरे से, तुम्हारे शेयर्स खरीद लो मेरे से, आई हैव बॉट मे बी 15% ऑफ द शेयर्स, और ठीक है 15-25% शेयर्स आई हैव बॉट, you buy that shares at a higher price, then I'll go from here, I'll not buy your company. ऐसे भी बोल सकता हूँ. or some other, any kind of agreement can be there in standstill agreement. Sorry. ठीक है, तो ये, हाँ ये हो गया. yeah, 10 points are there, that's it. These are anti takeover measures, active measures है. ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ये दोनों में से ना एक आता ही आता है एग्जाम में. द अर्लियर वन प्रिवेंटिव मेजर्स, ठीक है, और दिस वन एक्टिव मेजर्स. जस्ट रिमेंबर वन, एनी वन थिंग. ठीक है, व्हाइट नाइट में एग्जैक्टली क्या हो रहा था. ओके, व्हाइट नाइट में देयर विल बी अ फ्रेंड who will to that friend I'll sell my company or part of my company or the entire company before the raiders comes. ठीक है, और when the raider has arrived, वो आते आते मैं किसी को सेल कर दिया मेरा कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी को, so the raider will go. White square defense में there is no friend who will buy my company, but I have few friends. Okay, so I can give them part of my company, थोड़े थोड़े shares उनको दे देता हूँ. ठीक है, and they'll not sell the shares to anyone. And after that raider goes, I'll buy the shares. Green mail में I'll the raider has acquired some of the shares of my company. To protect my company to get being takeover, I need to buy the shares from the raider itself, and raider will sell me the shares at a higher price. ठीक है, वो ब्लैकमेल करता है मेरे को, कंपनी बचाना है तो बाय द शेयर्स फ्रॉम मी. ठीक है, दैट इज इन ग्रीन मेल. व्हाइट मेल में एज अ टारगेट कंपनी आई विल डिस्ट्रीब्यूट इनफ शेयर्स इन द मार्केट. सो इतने सारे शेयर्स हो जाते हैं मार्केट में, यूजिंग बोनस शेयर्स, राइट्स इशू और प्राइवेट प्लेसमेंट, एनी मेथड, बहुत सारे शेयर्स हो जाते हैं मार्केट में, सो दैट द रेडर विल स्क्रैच हिज हेड हाउ टू एक्वायर दीज मेनी शेयर्स. सो ही विल बी डिसहार्टेंड एंड विल गो ऑफ. पैकमैन हाँ, पैकमैन डिफेंस में देर इज द टारगेट कंपनी
का जो shares who is the raider has come and acquiring the shares of target company. So target company will not defend it shares, instead it will go to raiders company and start acquiring its shares. ठीक है, तो रेडर विल बी वेरी मच फ्राइटेंड, वो डर जाएगा, अरे मेरे मेरे कंपनी खतरे में आ गया अभी करके, तो ही विल लीव द टारगेट कंपनी एंड स्टार्ट प्रिवेंटिंग इट्स ओन कंपनी. Crown Jewels lockup में the target company will have some brand or some beautiful asset, ठीक है, which is attracting the raider, so I'll sell that beautiful asset to someone else. ठीक है, तो मेरा कंपनी एक्वायर करने नहीं आएगा. शेयर रीपर्चेस में आई रीपर्चेस शेयर्स फ्रॉम द मार्केट. रेडर इज बाइंग माई शेयर्स फ्रॉम द मार्केट, इवन आई गो एंड बाय माई शेयर्स इन द मार्केट. ठीक है, एट हायर प्राइस दैन द रेडर, तो सब लोग मेरे को सेल कर देंगे शेयर्स, और रेडर को कोई सेल नहीं करेगा, तो वो चला जाएगा हार के. डाइवेस्टर्स, डाइवेस्टर्स में I'll sell off or I'll make my a division or else a subsidiary company into separate company, and I'll sell it off or I'll make it just keep it as a different company. तो उसको अलग ही कंपनी बना देता हूँ मैं. ठीक है, तो मेरा कंपनी व्हाट यू से द टारगेट कंपनी, द रेडर विल नॉट बाय माय कंपनी. ठीक है, बिकॉज क्यों वो बाय कर रहा था, बिकॉज वही जस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का डिवीजन विच वॉज वेरी मच एफिशिएंट इन माय कंपनी. सो इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिवीजन ही मैं किसी को सेल कर देता हूँ या फिर दूसरा कंपनी बना देता हूँ, तो माय कंपनी विल बी सेव्ड फ्रॉम द रेडर. डाइवेस्टर्स में asset restructuring में it is just the restructuring of the assets, so that I'll make my asset portfolio very much unstable, so that trader will not be interested in buying my company, because my asset is just कुछ भी asset फालतू का बना दिया मैंने, तो trader is not interested. Finally standstill लिख दी मैं. ठीक है, तो अभी बताएं. हाँ ठीक है, so this was it about today. ठीक है, I hope you don't have any doubts in that. ठीक है, बहुत explain तो ठीक ठाक किया मैंने. Just I'll share the notes, you just see it for the exam point of view, very important. Just remember what is there and just one example कि exactly होता क्या है. In your own words you can write it. ठीक है, बट रिमेंबर द टर्मिनोलॉजीज. ये व्हाइट नाइट मेरे को बहुत बार है ना एग्जाम में ग्रीन मिल के जगह ब्लैक मेल ही मिला है लिखा हुआ. ओके, सो जस्ट रिमेंबर द टर्मिनोलॉजीज. ओके, रिमेंबर दिस पैकमैन डिफरेंस. वो कॉपी करके लिखते हैं ना, तो PACK लिखते हैं पैकमैन. ठीक है, के नहीं है, PAC है पैकमैन डिफरेंस. ओके, सो जस्ट रिमेंबर द नेम्स, द स्पेलिंग एंड यू कैन एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स इन एग्जाम. ठीक है, हाँ, सो दैट्स व्हाट फॉर टुडे. चलो, अरे ठीक है, विल so anything else or shall we log off? ठीक है, okay then, see you everyone, bye bye, thank you. Thank you, sir. Thank you. Vaishnavi.